मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो या ना पढ़ो। इट डजेंट मैटर वेदर यू रीड और नॉट। इट डजेंट मैटर वेदर यू रीड और नॉट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम जाओ या ना जाओ। इट डजेंट मैटर वेदर यू गो और नॉट। इट डजेंट मैटर वेदर यू गो और नॉट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम बोलो या ना बोलो। It doesn't matter whether you speak or not. It doesn't matter whether you speak or not. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम खाओ या ना खाओ। It doesn't matter whether you eat or not. It doesn't matter whether you eat or not. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझसे बात करो या ना करो। It doesn't matter whether you talk to me or not. मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू रीच होम। आई एम जस्ट अबाउट टू रीच होम। मैं बस वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू रीच देयर। आई एम जस्ट अबाउट टू रीच देयर। मैं बस खाना खाने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू हैव फूड। आई एम जस्ट अबाउट टू हैव फूड। मैं बस उसे कॉल करने ही वाला हूँ। I am just about to call him. I am just about to call him. मैं बस उससे पूछने ही वाला हूँ। I am about to ask her. I am about to ask her. मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो। I have to admit you are very shameless. I have to admit you are very shameless. मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। I have to admit your mother is very nice. I have to admit your mother is very nice. मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। I have to admit your English is so good. I have to admit your English is so good. मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो। I have to admit you are so greedy. I have to admit you are so greedy. मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। आई हैव टू एडमिट यू आर सो क्लेवर। आई हैव टू एडमिट यू आर सो क्लेवर। जब देखो तुम फ़ोन चलाते रहते हो। वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप यूजिंग फ़ोन। वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप यूजिंग फ़ोन। जब देखो तुम बहाने बनाती रहती हो। वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस। Whenever it is seen, you keep making excuses. जब देखो तुम पैसे मांगते रहते हो। Whenever it is seen, you keep asking for money. Whenever it is seen, you keep asking for money. जब देखो वो गेम खेलता रहता है। Whenever it is seen, he keep playing games. Whenever it is seen, he keep playing games. जब देखो चाय चाय चाय। Whenever it is seen, टी टी टी। शुरू शुरू में ऐसा होता है। इनिशियली इट हैपेंस। इनिशियली इट हैपेंस। शुरू शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था। इनिशियली आई ऑल्सो थिंक सो। इनिशियली आई ऑल्सो थिंक सो। शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था। इनिशियली आई डिडेंट नो। इनिशियली आई डिडेंट नो। शुरू शुरू में हर किसी से गलती होती है। Initially, everyone makes mistake. Initially, everyone makes mistake. ये वाला कितने का है? How much is this one? How much is this one? वो वाला कितने का है? How much is that one? How much is that one? तुम्हारा मोबाइल कितने का है? How much is your mobile? How much is your mobile? ये वाला मोबाइल कितने का है? हाउ मच इज़ दिस मोबाइल? हाउ मच इज़ दिस मोबाइल? ये शर्ट कितने का है? हाउ मच इज़ दिस शर्ट? हाउ मच इज़ दिस शर्ट? ऐसा लगता है आप मेरी बात समझे नहीं। इट सीम्स दैट यू डिडेंट गेट माई पॉइंट। इट सीम्स दैट यू डिडेंट गेट माई पॉइंट। ऐसा लग रहा है कि आपने ध्यान नहीं दिया। It seems that you didn't pay attention. It seems that
You didn't pay attention. ऐसा लगता है कि आप सुन नहीं रहे थे. It seems that you were not listening. It seems that you were not listening. ऐसा लगता है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है. It seems that you don't believe me. It seems that you don't believe me. ऐसा लगता है कि आप इसे हल्के में ले रहे हैं. It seems that you taking it lightly. पहले मैं 8 घंटे सोया करती थी. Earlier, I used to sleep 8 hours. Earlier, I used to sleep 8 hours. पहले मैं नॉनवेज खाया करती थी. Earlier, I used to eat non-veg. Earlier, I used to eat non-veg. पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे. Earlier, we used to have a lot of fun. Earlier, we used to have a lot of fun. पहले वो अच्छे से बात किया करता था. Earlier, he used to talk decently. Earlier, he used to talk decently. पहले हम घंटों बातें किया करते थे. Earlier, we used to talk for hours. तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो. You get angry over small things. You get angry over small things. वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है. She sheds tears over small things. She sheds tears over small things. वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है. He gets irritated over small things. He gets irritated over small things. छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो. Don't get offended over small things. Don't get offended over small things. मेरे बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते हैं. My boss shouts over small things. दम है तो बोल कर दिखाओ. Show by speaking if you have power. Show by speaking if you have power. दम है तो मार कर दिखाओ. Show by beating if you have power. Show by beating if you have power. दम है तो छू कर दिखाओ. Show by touching if you have power. Show by touching if you have power. दम है तो जाकर दिखाओ. Show by going if you have power. Show by going if you have power. दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखाओ. Show by speaking English if you have power. Show by speaking English if you have power. यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ. This is what I wanted to tell you. This is what I wanted to tell you. यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था. This is what I wanted to show you. This is what I wanted to show you. यही तो मैं आपसे पूछना चाहता था. This is what I wanted to ask you. This is what I wanted to ask you. यही तो मैं सुनना चाहता था. This is what I wanted to hear. This is what I wanted to hear. यही तो मैं जानना चाहता था. This is what I wanted to know. यही तो मैं जानना चाहता था. This is what I wanted to know. झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to lie. It doesn't befit you to lie. चोरी करना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to steal. It doesn't befit you to steal. गाली देना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to abuse. It doesn't befit you to abuse. यह काम करना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to do this work. It doesn't befit you to do this work. चुगली करना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to backbiting. It doesn't befit you to backbiting. चुगली करना आपको शोभा नहीं देता. अब चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है. It's no use crying now. It's no use crying now. अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है. It's no use repenting now. It's no use repenting now. अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. Now it's no use to go there. Now it's no use to go there. अब उसे मक्खन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है.
Now it is no use buttering her. Now it is no use buttering her. अब उसकी खुशामद करने से कोई फ़ायदा नहीं है. Now it is no use to pursue her. Now it is no use to pursue her. मैं परीक्षा पास नहीं कर सका, हालांकि मैंने कड़ी मेहनत की थी. I could not pass the exam, although I worked hard. I could not pass the exam, although I worked hard. हालांकि बारिश बहुत हुई थी, फिर भी हम पार्क गए थे. Although it rained a lot, we went to the park. Although it rained a lot, we went to the park. मैं कल रात सो नहीं सका, हालांकि मैं बहुत थका हुआ था. I couldn't sleep yesterday, although I was very tired. I couldn't sleep yesterday, although I was very tired. मुझे जॉब नहीं मिली, हालांकि मैं उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हूँ. I didn't get the job, although I am qualified for the position. ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना है. Unwillingly, I have to go there. Unwillingly, I have to go there. ना चाहते हुए भी उसे क्रिकेट खेलना पड़ा. He had to play cricket unwillingly. He had to play cricket unwillingly. ना चाहते हुए भी मैं उसे मना नहीं कर सकता. I can't refuse her unwillingly. I can't refuse her unwillingly. ना चाहते हुए भी मुझे उससे प्यार से बात करना पड़ता है. Unwillingly, I have to talk her politely. Unwillingly, I have to talk her politely. Unwillingly, I have to talk her politely. आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, मुझसे लिखवा के ले लो. You can speak English fluently. Take my word for it. You can speak English fluently. Take my word for it. वह आपका पैसा वापस नहीं करेगा, मुझसे लिखवा के ले लो. He will not return your money. Take my word for it. He will not return your money. Take my word for it. वह इस्तीफ़ा देने वाला है, मुझसे लिखवा के ले लो. He is going to resign. Take my word for it. He is going to resign. Take my word for it. वो यहाँ नहीं आ रही, मुझसे लिखवा के ले लो. She is not coming here. Take my word for it. She is not coming here. Take my word for it. अपने शब्दों का ध्यान रखो. Be careful with your words. Be careful with your words. ध्यान से, पानी गर्म है. Be careful, the water is hot. Be careful, the water is hot. ध्यान से, नीचे ना गिरो. Be careful not to fall down. Be careful not to fall down. ध्यान से, बॉस गुस्से में है. Be careful, the boss is angry. Be careful, the boss is angry. ध्यान से, बाहर कुत्ता भौंक रहा है. Be careful, the dog is barking outside. Be careful, the dog is barking outside. मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था. I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था. I didn't mean to disturb you. I didn't mean to disturb you. मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने का नहीं था. I didn't mean to embarrass you. I didn't mean to embarrass you. मेरा मतलब आपको धोखा देने का नहीं था. I didn't mean to ditch you. I didn't mean to ditch you. मैं कॉफ़ी पीने के बजाय चाय पीऊँगा. I will have tea instead of coffee. I will have tea instead of coffee. मैंने लैपटॉप खरीदने के बजाय मोबाइल खरीदा. I purchased a mobile instead of laptop. I purchased a mobile instead of laptop. चलो टीवी देखने के बजाय क्रिकेट खेलते हैं. Let's play cricket instead of watching TV. Let's play cricket instead of watching TV. समय बर्बाद करने के बजाय हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए.
Instead of wasting time, we should learn English. Instead of wasting time, we should learn English. ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना है. Unwillingly, I have to go there. Unwillingly, I have to go there. ना चाहते हुए भी उसे क्रिकेट खेलना पड़ा. He had to play cricket unwillingly. He had to play cricket unwillingly. ना चाहते हुए भी मैं उसे मना नहीं कर सकता. I can't refuse her unwillingly. I can't refuse her unwillingly. ना चाहते हुए भी मुझे उससे प्यार से बात करना पड़ता है. Unwillingly, I have to talk her politely. Unwillingly, I have to talk her politely. जब तक तुम घर पहुंचोगे डिनर तैयार हो जाएगा. By the time you reach home, dinner will be ready. By the time you reach home, dinner will be ready. जब तक तुम इंजीनियर बनोगे मैं रिटायर हो जाऊंगा. By the time you become engineer, I will retire. By the time you become engineer, I will retire. जब तक बॉस ऑफिस पहुंचेंगे मैं सारा काम कर लूँगा. By the time boss reach at office, I will finish all work. By the time boss reach at office, I will finish all work. जब तक तुम यहाँ आओगे बहुत देर हो जाएगी. By the time you come here, it will be too late. यह खाना मुझे मेरी माँ के खाने की याद दिलाता है. This food reminds me of my mom's food. This food reminds me of my mom's food. यह कॉलेज मुझे मेरे कॉलेज की याद दिलाता है. This college reminds me of my college days. This college reminds me of my college days. यह घड़ी मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाती है. This watch reminds me of my grandfather. This watch reminds me of my grandfather. उसका चेहरा मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाता है. Her face reminds me of my friend. Her face reminds me of my friend. Her face reminds me of my friend. आपको यह परीक्षा किसी भी तरह पास करनी पड़ेगी. You will have to pass this exam by hook or by crook. You will have to pass this exam by hook or by crook. मुझे कैसे भी करके एक नया आईफोन चाहिए. I want to get a new iPhone by hook or by crook. I want to get a new iPhone by hook or by crook. आपको किसी भी तरह इस समस्या को सुलझाना होगा. You have to fix this problem by hook or by crook. You have to fix this problem by hook or by crook. मैं कैसे भी करके इस काम को पूरा करूँगा. I will finish this work by hook or by crook. I will finish this work by hook or by crook. मुझे कैसे भी करके अंग्रेजी सीखना होगा. I have to learn English by hook or by crook. मोबाइल चलाते हुए समय का पता ही नहीं चलता. Time flies while using mobile. Time flies while using mobile. शॉर्ट्स देखते हुए समय का पता ही नहीं चलता. Time flies while watching shorts. Time flies while watching shorts. किताबें पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता. Time flies while reading books. Time flies while reading books. माँ से बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता. Time flies while talking to mama. Time flies while talking to mama. अंग्रेजी बोलने में संकोच ना करें. Don't be shy to speak in English. Don't be shy to speak in English. किसी के साथ बदतमीज़ी मत करो. Don't be rude to anyone. Don't be rude to anyone. मूर्ख मत बनो, समझदार बनो. Don't be silly, be sensible. Don't be silly, be sensible. बच्चे की तरह व्यवहार ना करें. Don't behave like a child. Don't behave like a child. खुद को दूसरों के लिए मत बदलो. Don't change yourself for others. Don't change yourself for others. मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है. I am having to go to Delhi.
I am having to go to Delhi. उसे यहाँ आना पड़ रहा है. He is having to come here. He is having to come here. हमें काम करना पड़ रहा है. We are having to work. We are having to work. तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है. You are having to cook food. You are having to cook food. उन्हें भागना पड़ रहा है. They are having to run. They are having to run. मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ. I talked to her at times. I talked to her at times. मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ. I watch TV at times. I watch TV at times. मैं कभी कभार बुक्स पढ़ता हूँ. I read books at times. I read books at times. मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ. I go there at times. I go there at times. मैं कभी कभार इंग्लिश बोलता हूँ. I speak English at times. I speak English at times. जब तक मैं ना आऊँ तुम मत जाना. Till I do not come, do not go. Till I do not come, do not go. जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए. Till I didn't come, you didn't go. Till I didn't come, you didn't go. जब तक तुम यहाँ हो मैं खुश हूँ. Till you are here, I am happy. Till you are here, I am happy. जब तक वह आया मैं जा चुका था. Till he came, I had left. Till he came, I had left. जब तक वह नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे. Till he does not come, we will not go. Till he does not come, we will not go. खाना खाकर जाना. Go after eating food. Go after eating food. मुझसे मिलकर जाना. Go after meeting me. Go after meeting me. मुझे बताकर जाना. Go after telling me. Go after telling me. हेलमेट पहनकर जाना. Go after wearing helmet. Go after wearing helmet. दवाई खाकर सो जाना. Sleep after taking medicine. Sleep after taking medicine. वह खुद ही वहाँ गया था. He himself went there. He himself went there. मैं खुद ही चला जाऊँगा. I will go myself. I will go myself. तुम खुद ही चले जाओ. You go yourself. You go yourself. वह खुद ही चला जाएगा. He will go himself. He will go himself. वह खुद ही कर लेगी. She will do it herself. She will do it herself. झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to lie. It doesn't befit you to lie. चोरी करना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to steal. It doesn't befit you to steal. गाली देना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to abuse. It doesn't befit you to abuse. यह काम करना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to do this work. It doesn't befit you to do this work. चुगली करना आपको शोभा नहीं देता. It doesn't befit you to backbiting. It doesn't befit you to backbiting. बात को बढ़ाओ मत. Don't elongate the matter. Don't elongate the matter. तुम बात को बढ़ा रहे हो. You are elongating the matter. You are elongating the matter. मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता. I don't want to elongate the matter. I don't want to elongate the matter. बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो. Don't try to elongate the matter. Don't try to elongate the matter. बात को क्यों बढ़ा रहे हो?
Why are you elongating the matter? Why are you elongating the matter? इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे. On this pretext, we will see your home as well. On this pretext, we will see your home as well. इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूँगा. On this pretext, I will meet you as well. On this pretext, I will meet you as well. इसी बहाने हम चाय भी पी लेंगे. On this pretext, we will have tea as well. On this pretext, we will have tea as well. इसी बहाने हम एक दूसरे को जान भी लेंगे. On this pretext, we will get to know each other. On this pretext, we will get to know each other. इसी बहाने तुम इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे. On this pretext, you will learn speaking English as well. मेरा इरादा आज स्कूल जाने का नहीं है. I don't intend to go to school today. I don't intend to go to school today. मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं है. I don't intend to cheat you. I don't intend to cheat you. क्या तुम्हारा इरादा मेरी जान लेने का है? Do you intend to kill me? Do you intend to kill me? तुम्हारा इरादा उसे पीटने का नहीं था. You didn't intend to beat him. You didn't intend to beat him. उसका इरादा नौकरी छोड़ने का है. He intends to quit the job. He intends to quit the job. ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो? How come you can steal my money? How come you can steal my money? ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो? How come you can beat him? How come you can beat him? ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी? How come you lost the keys? How come you lost the keys? ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया? How come he slapped you? How come he slapped you? ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की? How come he didn't even talk to you? How come he didn't even talk to you? मैं कूदने से डरता हूँ. I am afraid of jumping. I am afraid of jumping. वह बीमार होने से डरती है. She is afraid of getting sick. She is afraid of getting sick. वह अपना जॉब खोने से डरता है. He is afraid of losing his job. He is afraid of losing his job. मैं फेल होने से डरता हूँ. I am afraid of getting fail. I am afraid of getting fail. मैं गाड़ी चलाने से डरता हूँ. I am afraid of driving a car. I am afraid of driving a car. वह नौकरी पाने के लिए तड़प रहा है. He is longing for getting a job. He is longing for getting a job. मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ. I am longing for talking to her. I am longing for talking to her. मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ. I am longing for meeting you. I am longing for meeting you. मैं गांव जाने के लिए तड़प रहा हूँ. I am longing for going to village. I am longing for going to village. वह खाना खाने के लिए तड़प रही है. She is longing for eating food. She is longing for eating food. थोड़ा तो शर्म करो. Feel shy at least a little bit. Feel shy at least a little bit. थोड़ा सा तो दे दो. Give at least a little bit. Give at least a little bit. थोड़ा सा तो खा लो. Eat at least a little bit. Eat at least a little bit. थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो. Smile at least a little bit. Smile at least a little bit. थोड़ा सा तो चख लो. Taste at least a little bit. Taste at least a little bit. मुझे लगा आज सोमवार है. I thought
इट वॉज मंडे टुडे। आई थॉट इट वॉज मंडे टुडे। मुझे लगा तुम रोहित हो। आई थॉट यू वर रोहित। आई थॉट यू वर रोहित। मुझे लगा तुम शादीशुदा हो। आई थॉट यू वर मैरिड। आई थॉट यू वर मैरिड। मुझे लगा तुम घर पर हो। आई थॉट यू वर एट होम। आई थॉट यू वर एट होम। मुझे लगा आप गुस्सा हो मुझसे। आई थॉट यू वर एंग्री विथ मी।